Good afternoon, one and all. I take this opportunity to introduce today's guest speaker for AICT IST induction program, Mr. Anish Sahasrabudhe sir. On behalf of AG Patil Polytechnic Institute, I am Mr. JP Pinzar, lecturer in Mechanical Engineering Department. Welcome today's speaker, Mr. Anish Sahasrabudhe, and Dr. M.S. Obole, Coordinator and Principal of Polytechnic Wing, Mr. J.M. Jaketia, Vice Principal, and Mr. S.K. Mohite, Head of Mechanical Engineering Department, my colleagues and dear participants. Today is the fifth day of this induction program on research paper writing and IP rights sponsored by AICT IST New Delhi. The topic for today is stress management. We as a human always face different problems and challenges causing stress in our life. To develop ability to handle such stress, this session is going to be a key training to all of us. Here is Mr. Anish Sahasrabudhe sir's brief profile. Mr. Anish is BCC cricket umpire, business consultant, international image consultant, owner of restaurant chain, chef of who knows cook more than 800 dishes, motivational speaker and trainer and event manager. About his cricket umpiring career, he has started the umpiring since 2002. He is the youngest state panel umpire of Maharashtra, qualified at the age of 16. He was qualified to be on the New South Wales Cricket Umpires Association Australia. He holds experience of more than 1500 days of cricket. As a business consultant, he is a consultant for more than 10 renowned jewelers in Maharashtra. Also, he is consultant for 23 companies as of now, including sectors like retail stores, hospitals, real estate. He had conducted more than 600 corporate workshops. As a motivational trainer, he addressed more than 1,80,000 students till date. He speaks on more than 13 topics for students, parents, employees, and teachers. He also conducted more than 1,200 seminars. Looking to his career graph, he has received India Leadership Award for Most Multitasking Entrepreneur of India by the hands of well-known actress Soha Ali Khan at a function held in Bangalore in 2018. Dainik Bhaskar Eminence Award for being Most Eminent Personality, proud Maharashtrian Award as he is Best Corporate Trainer of Maharashtra, 95 My FM My Maharashtra Award for Most Versatile Personality of Maharashtra. And finally, he has been awarded as Solapur Ratna for being a most prestigious gem of Solapur. Such a versatile personality is going to guide us today. I welcome you, Anis sir, and request you to start the session on stress management. Thank you. Over to you, Anis sir. Thank you, Please. Jahid ji. Good afternoon, one and all. It was indeed a stressful moment to listen to yourself, but then it was indeed a great pleasure as well. I mean, such a wonderful introduction to start a session. I hope you all guys are well aware of Google Meet and everything. So before I could start my session, let me tell you few rules that we all need to follow, few guidelines that we need to follow throughout the 90 minutes that we would be communicating. To start with, let me ask you the first thing. Let me tell you the first thing is that it is going to be an interactive session. So all other trainers, speakers would be guiding you to keep your mics on mute mode. In my session, it will be completely different. I would like you guys to unmute yourselves, speak out, and then probably we can converse in a much better manner. So we are here for a great interaction, not just a great listening. So let me be very honest. I am here to not to speak with all of you. I am here to listen back from you and probably take away at least 2 to 3 new points that I would love to learn from all you faculty members, because you guys are guiding, you guys are developing the next generation of our country. So thank you so much for first of all inviting me here. Thank you, AG Patil Polytechnic College and AICTE again, and thank you all of you. The second rule is whatever problems you guys have, you can ask me in 3 ways. One is you can type in the chat box. Second thing, you can raise your hand, which comes as raise hand option, and that would pop up here. Uh,
my phone is ringing, just neglect that. I mean, I'm staying in one of the hotels in Kerala at present. I'm not in my hometown. So that is gonna go ringing. I cannot leave this place and attend that. So you can raise your hand. I hope you all are aware of how to use a raise hand option in Google Meet. The third way you can ask a question is you can unmute your mic and say, "Excuse me." Yes, so you could say, "Excuse me," and you can come up with your question, whatever question you guys have. I mean, either you can have a question in terms of professional stress, personal stress, your biological stress, and there are many different stress factors which we guys are facing in our everyday life. So I hope all the three rules are clear. There are few things which I would like take out of the session is we are not here to burst our stress. I mean, to be very honest, one session would not burst your stress, but this session would surely give you a guideline how we can burst our stress and how we can get out of a stressful life to a peaceful life. So let us hope after 90 minutes of this session, we all would have a systematic approach, a guideline on how we can have a peaceful life. So one question before I could really start and touch the core aspects and core parts of the content today. How many of you have ever faced a stress in your life? How many of you have ever faced a stress in your life? Just raise your hand, please. Let me check how many hands have been raised. So Amol Bhavtankarji has raised his hand. Okay, who else? So Tukaram Sargar, he has raised his hand. Many hands coming up. Kailas Pardeshiji. So, oh, great, superb. I mean, I could see here 4, 5, 6, 7. Priya Shinde ma'am, Deepa Vaidya ma'am. Oh, many hands up. So just raise your hand and keep it like that so that I get a count who all are living a peaceful life and who all are living a stressful life. So 5, 6 again, 7. So let us take whether we have more peaceful people in the session today or more stressful people in the session today. So I just need to take a call on this. So many hands are coming up, but as of now, I could see only 6 out of them. Many guys are pressing that raise hand button, and then they are bringing their hands down. So roughly 6 to 7 at random, and there are few guys who are. Life is always stressful is the comment which I have got in a chat box from Mr. Amol Bhavtankarji. Life is always stressful. Not really, sir. For me, we make our life stressful. It is no one else. I mean, it is not the situation which makes your life stressful. It is we who think that the situation is stressful. So, Amolji, since you have started with the communication, can you just unmute yourself? I mean, before I could start sharing my presentation here, let us have a good conversation. So Amolji, tell me, I mean, why did you say life is always stressful? Can you quote one or the other example or a situation? I mean, you can unmute yourself now. Yeah. Yes, Amolji, I cannot hear you still. Can anyone else? Hello. I hope I'm audible. No problems with my AV. Yes, I could see somebody other. Madhura Kulkarni, madam. You have unmuted yourself by any chance? Sudeep Upadhyayji, someone is trying to unmute. Could you please help them to unmute? I mean, we want people to speak because stress comes out when you speak to yourself, when you speak to people, and when you share your problems, your situations, and your worries. I mean, this is the basic step while you burst your stress. So, Amolji, yes, you can unmute yourself. If you are on with your audio system, you can unmute yourself now. Any one of you, I mean, those who want to share their experience, share their situation, you are uh, always welcome. I mean,
Can the technical guy can help us in this? I mean, anyone from the core committee, from the organizing committee, probably Jahid ji or Sudeep ji, can anyone help these candidates to unmute themselves? Anilji, this is Kulkarni, sir. Yes, yes, Kulkarni sir. Yep. Phone has been delivered to the candidate. We have not kept with ourselves. So anyone Okay. Anyone unmute? Superb, superb. Thank you so much. can Great, great. Hmm? Yes, great. So who would be the first person who can share his or her problem with me? A stressful situation. Anything that you guys would share that with me. Anyone, I mean, let us start with one problem at least. I mean, see, I have been telling this, I mean, I'll be switching between English and Hindi. Like I keep saying one thing. If you go out and ask people, hey buddy, how are you? Anyone, your professional colleagues, your relatives, your friends, your family members, any damn person, if you go and ask someone, hey buddy, how are you? The very first answer comes as, I'm Superman, how about you? I'm good, how about you? So no guy or no person is ready to share his or her problem with you is the basic problem in the current era. I mean, we are heading into a digital revolution. We are entering into a world where we'll have Internet of the Things as 80% of our life, and we all are busy scrolling down our Insta handle, our Facebook handle, our WhatsApp chat box, and everything. And then we have no one with whom we can share our problems. तो दिल से तो सब लोग दुख बट मुंह से कोई बोलेंगे नहीं is the basic problem that we all guys are facing at the current world. I mean, that's the basic and the worst problem that is been like leading to many odd depressions, many odd frustrations, many odd suicide cases, many odd divorce cases, many odd tutu meme wala scene in every home amongst two different generations because हम लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे. I mean, you all are faculty members. I'm pretty sure आप लोग जितना एक दूसरे से बात करते रहोगे ना, उससे 10 गुना ज्यादा एक दूसरे के बारे में बात करते रहोगे. I mean, we people don't talk to a person. We people always talk about a person, and that creates a stress. Because आप A और B बंदा बात कर रहा है, he'll not speak up. A would not speak about B, and B would not speak about A. What would happen is A and B would speak about C. इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा. इससे ना किसी चीज पे हल निकलेगा, ना किसी चीज पे सॉल्यूशन मिलेगा, ना किसी चीज का कोई डेरिवेटिव मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. This would only create a stress. And I remember in one of our umpiring seminars, there was one good poster written on one of the walls of our uh, session. It was written, people who gossip with you would surely gossip about you. इसका मतलब है जो लोग आपके साथ किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं, वही लोग किसी दूसरे के साथ आपके बारे में जरूर बात करते रहेंगे. इससे क्या होगा? We would have a stressful life. Nothing else would come out of this. Nothing else, take my words. So guys, it's a humble request. Please speak up. We all are teachers. We all are educators. We all are guides. We all are mentors. Yes, I've got one more raised hand from Kailash, Pardeshi, Priya, Shinde. So please, I mean, you can unmute yourself, Kailash ji, Priya madam, Amol Balkankar sir, and you can speak up. Now, let us start with the first problem that we have. You can definitely share your problem and you can unmute yourself. कब ऐसे हुआ है कि you had that stressful feeling? What was the situation that you felt that you are stressed? What was the incident that happened that made you stressed? Anything and everything in terms of professional challenges, in terms of career challenges, in terms of personal relations, in terms of dealing with students.
Who starts with it? First question. Yes. Hello. Very good Hello. afternoon, sir. Very good afternoon, sir. Someone is trying to speak, but I'm not getting it. Very good afternoon, sir. I am Good Kailash afternoon, Pardeshi. Kailash ji. Yes. How are you? Yes. I am fine, sir. Not Mhm. fine, but still it's going on. Life is going on. Still, we are saying we are fine, right? Yes. Okay. So tell me. That just formality that I should say I am fine. Actually, everybody Exactly. 90% of us are not fine. We are sh- Exactly. uh, we are dealing with n number of problems in our life, Exactly. and that makes us stressful. True. So, what Uh, was the last situation, last incident that you felt uh, it was like the stress beyond your control? I mean, this was like a बहुत stressful moment थी, and I just want to share this with you. Please share that with just me. yes. Just yesterday, Hmm. I visited eye specialist doctor, Okay. and then he suggested me to make a glass. Okay. Spect. Uh, I tried so many at yes optical shop. I tried so many glasses, but Hmm. the frame was not suitable. Okay. At last, he forced me that this is very nice. This will suit you, and Okay. I agreed to him. I gave Hmm. all the amount, and I agreed. And Okay. just after 10 minutes, I went back to him, and I said that Hmm. I don't want to do these particular spectacles. Okay. At that time, he said to me that Hmm. now I can't do anything because I have already ordered the glasses to other city. Okay. Within 10 minutes, how can he do that? Then True. he said that only you will get the amount of frame only, you will not get the amount of Glasses. glasses. Okay. That 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 made me very angry, Hmm. and I started shouting loudly there. Okay. I quarreled with him, and Okay. the matter was so much. The intensity was so much high. Aggravated. Yeah. Yes. Yes. So that made me stressful Okay. throughout the night. I You couldn't sleep. thought yes, I thought about that particular incident. Incident only. Why should I did that and all these Okay. things. Okay. This is So, just a event. This is just one event. I in daily life I used to face so many events like this. true, true. So, Yes. Kailash, a basic question to deal with this. I mean, what was the cost that you fought for? What was Yes. the value? What was the cost? 2,000, Cost 3,000 3,000 for glass and 2,000 for frame. frame. So So he said out of 5,000, you would not get 3,000 back, right? You would get yes, only yes, 2,000 out of 5,000 that you paid him. yes, Okay. sir. Now, this stress is kind of an externally affected internal stress. There are two types of stresses. First is an internal stress, the other one is an external stress. For example, COVID came into our life. It was an external stress, right? Right. But many people took it so seriously and took it so loudly on their own shoulders that the external stress actually gave a birth to an internal stress. Right? Now, whenever we deal with a situation, we always think, see, the biggest problem with all of us, I'm not saying you all, I'm saying all of us, including me, is that we feel this is a life and death situation. हम लोगों का ऐसा लगता है कि बस ये जीत हार मेरे लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगी और आई नीड टू विन every moment in my life, and that is the biggest mistake what we do in terms of dealing with the situation. There are few situations which are beyond our control. So
I have got 4 A's. 4 A's for all of you. Let me just share a screen with all of you guys. Just give me 1 second for that. Yes. Okay. So I hope you all could see this screen here, right? Yes, sir. So there are 4 A's of stress management. The first A is avoid, right? So first A is avoid, other A is alter, third A is accept, and fourth A is adapt. So throughout this session for the next 1 hour, we need to define a situation and then implement all these 4 injections when and wherever it is required. So in case Sudeep ji, sorry, I hope I have taken a correct name. Not Sudeep ji, it was Kailash ji. Kailash ji. So either we had an option of adapting, we had an option of altering the way we reacted. So you need to change your way, the way you reacted, to keep yourself peaceful. It all starts inside. Whatever the situation may be, it all starts inside, right? Correct? Right, sir. Because you got angry, your voice level gone up. You started shouting. That shouting voice then aggravated into a situation where you had a fight with him, a verbal fight, and then that never made you sleep calmly throughout the night, right? What if you had an important lecture in the morning today? That one incident would have spoiled your night, had spoiled your entire sleep, your mood, your pretty romantic evening with your wife that day, and then your next day's professional commitment, for which they have been paid for. So either, as I said earlier, either we need to avoid such incidences, or we need to alter our ways, or we need to accept. And the fourth ways, we need to adapt. Because things were beyond our control, right? Right, Kailash? So Right, sir. we need to take this into consideration, what all things to avoid, what all things we would have altered in terms of dealing with that situation, what all things we would have accepted, and what all things we could adapt to avoid further such incidences in our life, right? तो जब भी कभी आप एक आध सिचुएशन के बारे में डील करते रहोगे, कौन सी चीजों का स्वीकार करना है, कौन सी चीजों में हम लोगों को चेंज करना है, हम खुद को. See, there are two ways to handle a situation. Either change a situation, change surrounding, or change yourself. आप जो हो रहा है उसको बदलो या फिर आप खुद को बदलो. There is no third way out. There is no third way out. Take my words. अगर आप उस सिचुएशन को और उस हैपनिंग को नहीं बदल सकते हो, यार खुद को बदलो ना. That is the easiest way. और अगर आप खुद को नहीं बदल सकते हो, आप उतने काबिल बनो कि आप सिचुएशन बदल सकते हो. I always said this during all my motivational sessions during COVID times. If I cannot go out and stop this COVID spread, better I should stay back home and change myself, which is in my hands. जो मेरे हाथ में है is to adapt the situation. तो कोविड के बारे में if we think a COVID situation for same to all of us, हम सभी लोगों के लिए ये कोविड सिचुएशन सेम थी. लोगों ने इसको अवॉइड किया कि नहीं हम लोग बाहर नहीं जाएंगे. बहुत सारे लोगों ने खुद को अल्टर किया, उन्होंने नई नई चीजें सीखी. बहुत सारे लोग वो स्टार मेकर पे गाना गा रहे थे, बहुत सारे बंदों ने वाइफ को कुकिंग में हेल्प किया. सो दे अल्टर देयर लाइफस्टाइल. Many of us, we accepted this is the situation was, this is beyond our control, and many of us we adapted. Now a difference between acceptance and difference between adapting things is acceptance could be without an agreement.
You don't like, but still you accept. It's like अगर मेरी बेटी ने लव मैरिज किया, और हमारे पास एक चीज होती है, पता है सबको, दोस्ती किसी के साथ भी चलेगी, शादी जो है ना वो अपने कास्ट के बंदे के साथ ही करो। ये है, आई मीन दिस इज हाउ वी हैव बीन taught up, we have been brought up. So अगर मेरा बेटा, मेरी बेटी कोई अलग कम्युनिटी वाले बंदे के साथ शादी कर लेते, we accept. At that moment, we don't agree adjust. I mean, we don't agree with the decision, but we accept. Right? 2 साल 3 साल के बाद जब हमें पता चल रहा है कि नहीं बॉस ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटी है, डिफरेंट रिलीजन, hello, check. Hello, check. Yeah. I hope Yes, I'm yes. audible Now, and visible too. Yeah. I hope I'm audible and visible too. Hello. yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Sorry, I'm on a hotel's Wi-Fi connection, and we have got a bit of disturbance. Excuse me for the same. So these are the things which gives you a stress. External factor. You need to you need to accept and move ahead. Nothing else is in your hands. So Kailash ji, I hope I have answered your question in a manner that you were expecting, and at least you could get something out of it. Probably a different way to deal with this situation, and probably a different approach, different perspectives to deal with it. I hope I have tried my level best and De- you're de- satisfied. Definitely, sir. I'm quite satisfied. Quite satisfied, happy with it. Yes, sir. See, Thank you very I much. yes, I'll tell you one thing to conclude all this. One thing to conclude all this. Every day brings a choice, right? Every day brings a choice to practice stress or to practice peace. So that choice is always in your hands. हर एक दिन हमें एक मौका देता है कि आप स्ट्रेस के साथ जियो या शांति के साथ जियो, वो चॉइस आपके हाथ में है बॉस. इफ वी विश टू हैव अ पीसफुल लाइफ, it stays with you, it is in your hands. No one can take peace out of your mind, right? Tell us if there is some noise coming. Yeah. Yep. So आप खुद शांत रहना चाहते हो ना, कोई भी चीज आपसे वो शांति छीन के नहीं ले सकती है. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर चाहे दुनिया कितनी भी शांत हो, सिचुएशन कितनी भी इजी हो, और अगर आपको स्ट्रेस लेना है तो आप किसी भी छोटी चीज का स्ट्रेस ले सकते हो. इट इज दैट सिंपल. सो स्ट्रेस always stays in your mind, nowhere else. For example, if I ask any one of you, I know Priya ma'am has raised her hand since long, so I'll be asking her to unmute. But before we move ahead, let me tell you something. अगर मैं कोई बंदे को या आप में से किसी को भी बोल दूं कि show me your stress, what would you show me? मैं अगर किसी को बोलता हूं बॉस ठीक है, I agreed, I accepted, I got to know that you had a huge stress. Show me your stress. What would you show me?
कोई मुझे दिखा सकता है कि ये मेरा स्ट्रेस है? It's an intangible thing. It's just the feeling, guys. It is nothing else. It is nothing else. Stress is just the connection and a chain of thoughts which are running in your mind. फॉर एग्जाम्पल, एक आध चीज मेरे लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है, वो चीज किसी दूसरे बंदे के लिए बहुत आसान हो सकती है, पीसफुल हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अ गाय स्टेइंग इन हिमाचल. Hello, check. I mean, there is seriously. Yep. I hope you can hear me again. If it goes down again, I'll be joining from my mobile. So I'll start using my mobile net, and yes. Yes. Doesn't matter, sir. No Yep, yep. problem at all. No. So let us have a peaceful life. That's the only request to everyone. Let us not have a stressful life. So मैं ये चीज बोल रहा था, whenever if I ask you to show me your stress, what would you show me? You would not show me anything. You would not be able to show me anything, rather, because stress stays inside our feelings, inside our thoughts. So if we change thoughts, automatically the stress gonna get burst out. जैसे मैंने अभी बोला कि हिमाचल वाले बंदे को आप अगर रेगिस्तान में भेजोगे, तो रेगिस्तान में जो बंदा रह रहा है वो तो खुशी से वहां पे जीता होगा, क्योंकि he has seen his entire life in like the same atmosphere. बट रेगिस्तान वाला बंदा अगर हिमाचल प्रदेश में जाता है, then it's a big problem for the रेगिस्तान guy. But then Himachal guy would be happy saying it is just a cool thing for me. So stress is nothing but what situation you are surrounded by. Stress is just a simple thing. As I said earlier, it is just the response. It is just the response to the situation that you are facing. So for me, life is just 10% what happens with you. I'm repeating again, life is just 10% what happens with you. 90% is the reaction what you give it to it. So life is 10% what happens with you, 90% is the reaction that you give it to it. मतलब अगर जिंदगी की हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे कि मेरी जिंदगी कैसी है, तो मेरी जिंदगी 10% 10% हैपनिंग्स के ऊपर डिपेंड रहेंगी और 90% मेरे रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड रहेंगी. तो अगर कोई बंदा आपको आके बोलता है कि यार मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, दैट मीन्स ही इज नॉट रिएक्टिंग इन द मैनर ही शुड रिएक्ट टू इट. See, if I tell you a simple question, I want every one of you to answer. I want everyone to raise your hand to answer this question. Tell me, raise your hand if you have got one or the other problem in your life. Economical problem, financial problem, social problem, emotional problem, family problem, medical problem. ऐसा कोई भी अगर प्रॉब्लम आपके लाइफ में हो, तो आप अभी आपका हैंड रेज करोगे. देखो, मैंने मेरा हैंड भी रेज कर दिया. इवन आई हैव गॉट प्रॉब्लम्स. आई मीन, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट. सो let me check how many hands gonna come up.
Let me check how many hands gonna come up. Only 2 hands, huh? This is not done. Come on, just raise your hand. If you have got one or the other प्रॉब्लम लाइफ में, अगर एक भी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे वो आपके करियर के बारे में रहेगी, आपके घर के बारे में रहेगी, रिलेशन के बारे में रहेगी, आपके स्टूडेंट्स के बारे में रहेगी, जॉब के बारे में रहेगी, आपके हेल्थ के बारे में रहेगी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, you need to raise your hand. You need to raise your hand. So no participation from the candidates. Huh? It is really surprising. We all are teachers, right? I'm repeating again. So that's okay. Acha, chat box में at least type Y. If you are not getting that option of raise your hand, at least type Y in a chat box. If you have got one or the other problem, एक भी अगर problem होगा life में, एक problem, I would not ask you to unmute. I know people are really scary कि यार ये बंदा unmute करने के लिए बोलता है, कौन बात करेगा बाद में. That's okay. I'll not ask you to unmute. You can type in a chat box saying why if you have got a genuine problem. So I have got one Y here. One Y here. Okay. So there are many problems here. Yeah, why. So there are many Ys coming up in a chat box. That's okay. That's okay. Guys, remember one thing. None of us have ever got a life where we don't have a problem. None of us have got a life where we don't have a problem. Let me be very honest with you. Everyone has got one or the other problem. That is for sure. That is for sure. हम सब लोगों को है, ये पहले चीज एक्सेप्ट करो. You would not have a problems free life. You would not have a problem free life. Please ask for a strength to the God. Please ask for a strength to the God to tackle with these problems. हम लोग प्रे भी कैसे करते हैं पता है भगवान को, यार मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम मत दो. भाई ऐसे कैसे होगा, प्रॉब्लम्स तो आएंगे. उसको टैकल करने की ताकत अगर हम लोग भगवान को मांगते रहेंगे ना, तब जाके कुछ मतलब वाली बात बन जाएगी. इस क्लास में, इस सेशन में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको प्रॉब्लम है नहीं. ओनली प्रॉब्लम दैट वी ऑल हैव इन कॉमन इज हम लोग अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे. सब लोग एक दूसरे के मुंह पे यही बोलते रहेंगे. जिस लाइन से मैंने आज का सेशन चालू किया था was a simple line. कैसे चल रहा है सब? बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है. ये जो झूठी बात हम लोग रोज उठ के कर रहे हैं ना, दैट इज द मेन प्रॉब्लम गाइस. जब तक आप लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगे, वो प्रॉब्लम बटेगा नहीं. और जब तक वो प्रॉब्लम बटेगा नहीं, उसकी ताकत नहीं कम होगी. और जब तक प्रॉब्लम की ताकत कम नहीं होगी, हम लोग उस प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे. इट इज दैट सिंपल. It is that simple. There is one line in chat box. No one can share problems. That is one of the problems. Amol ji very nicely quoted. Not sharing problem with anyone is the biggest problem, I would say. So share your problems. Once you start sharing with your problems, आपको पता चलेगा साला दूसरों की लाइफ अपने लाइफ से और बेकार चल रही है. हम लोग क्या है पता है, हम लोग बहुत ज्यादा कंपैरिजन कर लेते हैं. यार उसके लाइफ में ऐसे ऐसे हुआ, मेरे लाइफ में कब होगा. फर्स्ट रीजन फॉर द प्रॉब्लम, फर्स्ट रीजन फॉर द स्ट्रेस, कि यार उसके लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है. भाई आपने उसके लाइफ के सिक्के की एक साइड देखी है, उसके लाइफ के सिक्के की अगर आप दूसरी साइड देखोगे तब पता चलेगा साला अपनी खुद की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है. And that is how you need to see. That is how you need to have a bird eye view. That is how you need to have a 360-degree perception, 360-degree approach towards any of the incidents, any of the happening. And that is how you're going to come up with the solutions. And unless and until you come up with the solutions and a strength to tackle to the problem, you would not have a healthy, happy life. That is that simple. It is that simple. So guys, please keep in mind, we would not have a problem-free life. Don't expect. I'll ask you a simple question. Would you like to travel on a straight road? Would you like to travel in a rainy season where you would have a ghati section
where you are climbing mountains and you are getting down from the mountains from a scenic beauty. Option A is highway. Option B is pahadi wala road. Which road would you love to drive upon? कौन सा रोड आपको अच्छा लगेगा ड्राइव करने के लिए? A or B? So you need to answer. Come on. You need to answer this question. I'll not go further. I mean, straight road would you expect? Okay. एक बस रोड चल रही है, सीधी रोड है, उस पे अच्छा लगेगा, या कोई अच्छा घाटी वाला सेक्शन है वो वाला अच्छा लगेगा? डेफिनेटली हाँ? घाटी वाला अच्छा लगेगा सर. घाटी वाला अच्छा लगेगा, राइट? Who else? I mean, other people are just the listeners. ये this is not सत्संग और this thing कि आप जहाँ पे आराम से बैठ के सुन लो बस. I want you guys to communicate. I want you guys to converse with me. Let us have an interaction. Ghati wala section is good to travel. Priya Shinde madam, superb. Who else? Come on. Who else? Come on. So only 3 answers, huh? Out of 45 people that we have. So still waiting for few people to answer this. Which road? Straight highway, घाटी वाला superb turns and twist वाला road कौन सा पसंद आएगा? Straight highway. B. Straight highway again. Okay. This RMD SSOE Varze Pune. Okay. Ghati wala section is good to travel. So there are mixed opinions, but I would say 70% people would love to have a good drive on a Ghati wala section where थोड़ा हल्का सा drizzle हो रहा है, पूरा सराउंडिंग में ग्रीन है, वेर यू कुड सी अ खाई, काफी अच्छी खाई दिख रही है, माउंटेन्स दिख रहे हैं, वहां पे हम लोग पकोड़े खा रहे हैं, एंड दैट विल बी द वन डे ट्रिप वाला प्लान अच्छा जाएगा. आई होप दोज वुड हैव सेड हाईवे वाला रोड. आप उस पे ट्रिप के लिए जाओगे? आई मीन वुड यू गो ऑन अ हाईवे एज अ ट्रिप? RMD SSOE Varze and Prasad Dhuri ji, can you come up with the answers again? आप ट्रिप के लिए कहां जाओगे? विच डेस्टिनेशन वुड यू एंजॉय? अगर आपको उस डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करना है, विच डेस्टिनेशन वुड यू एंजॉय? कैन यू कम अप विथ इट? Hello. Yes, Kailash ji. Yes. Last week we visited Chikaldara, one of the coolest I know. place in Maharashtra. True. With lots of We were- waterfalls. yes. We were five friends together. Throughout the journey, I did not drive. But when Okay. the Ghatiwala road appeared or came, at that time I took the driving mode seat, and Yes. throughout the hills, I loved Yes. that driving. Driving there. Even when we were coming back at that time also, I drove the car throughout the hills, and once Okay. I came down, I gave it to the other people. Other guy. Okay. So So you enjoy driving in the mountain roads, right? Super. So Prasad Duriji has correctly said, final destination may be the same. Final destination may be the same, but the path we choose to reach may differ from person to person. Right? Now this is the answer that I was expecting, and it's a very correct and appropriate answer when we are dealing with a stress management session. Now consider Prasad Dhuri had chosen a straight highway wala road. Now this straight highway wala road is almost double in a distance, right? So for example, destination A to B is 200 kilometers from mountain wala roads. But if you need to take a straight highway, it is 400 kilometers. Now, Kailash Pardeshi ji, since he likes mountain driving, he drove from the Ghati section from the mountain roads, right? Now, what happened when both of them reached at a destination? When they reached at a destination, Kailash Pardeshi sir said, we just reached in 3 hours, right? He said, we reached in 3 hours. Whereas Prasad Dhuri said, no, yaar, it took 6 hours for us to reach. हमें 6 घंटा लगा यहाँ पहुंचने में.
बट रोड बहुत अच्छी थी यार, रोड हमने बहुत मस्त, मतलब एक एक गड्ढा नहीं था वहां पे, कुछ नहीं था, इट वाज लाइक सुपर रोड। तो कैलाश परदेशी जी ने बोला नहीं यार, मेरे रोड में गड्ढे थे, इवन दो लाइक माउंटेन साइड और बहुत अच्छा था, बट वहां पे गड्ढे बहुत थे ना। ना, जहां पे कंपैरिजन हमने चालू किया, एक दूसरे का दुख समझ में आ गया। द गाय हु ट्रेवल्ड फ्रॉम अ हाईवे फील्ड, यार मैं लेट क्यों पहुंचा, क्योंकि उसको पता चला कि ये बंदा जल्दी पहुंच गया है। एंड अ गाय जो जल्दी पहुंच गया हैड सम पोथोल, जहां पे कोई गड्ढे थे, ही ही प्रोबेबली फेल्ट कि यार ये हाईवे से डिस्टेंस ज्यादा लगा, लेकिन रोड अच्छी थी, मेरी वाली रोड बहुत खराब थी। नो, प्रसाद दुरी जी सेइंग इन अ चैट बॉक्स, स्ट्रेट हाईवे मे बी टाइम कंज्यूमिंग एंड may not be interesting, but the time instances we enjoy, whether it is straight or hilly, is important. Exactly. So Prasad Dhuri ji had a different analogy. He never wanted to enjoy the journey. He wanted to enjoy the destination. But कैलाश परदेशी हैड थॉट कि यार मुझे जर्नी भी एंजॉय करनी है और मुझे डेस्टिनेशन भी एंजॉय करना है। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन आपके दिमाग के अंदर, आपके मन के अंदर आप क्या सोच रहे हो, आपके मन के अंदर एग्जैक्टली क्या चीजें चल रही है। अगर आप आपके सक्सेस के डेफिनेशंस के बारे में, अगर आप आपके खुशियों के डेफिनेशंस के बारे में, अगर आप आपकी हैप्पीनेस की डेफिनेशंस के बारे में खुश हो, और आप उन 3 डेफिनेशंस को किसी दूसरे की 3 डेफिनेशंस के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हो, तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए पीसफुल ही होगी। प्रॉब्लम तब आएगा जब हम लोग एक दूसरे की डेफिनेशन से एक दूसरे का हैप्पीनेस जज करते रहेंगे। इट इज दैट सिंपल, इट इज दैट सिंपल। सो please keep in mind, please keep in mind, God has given us, I mean you all would be setting up a question paper, आप लोग स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर बनाते होगे, एंड यू वुड बी, वो फिर ये क्वेश्चन 1 में ऐसे करना है, क्वेश्चन 2 में ये क्वेश्चन डालेंगे, फिर 70% क्वेश्चन इजी रखेंगे, 20% थोड़े डिफिकल्ट रखेंगे। Hello, check, check, check. Hello, check. Hello, check. I hope I'm back again and I'm audible. This is really uh, putting me in trouble, but then I'm helpless. This is the only network that I have.
Yes, thank you, Deepa ma'am. Thank you for confirming that you could hear me. Thank you. Thank you so much again. So, what I was saying, even God has made some plans for us. Prasad Dhuri ji has posted something big, so I need to take out some time and read that out. But before that, I'll complete my sentence. So, even God has made something for us. He has set an excellent question paper for all of us. And take my words. He has given each one of us a different question paper. So मेरे लाइफ के लिए भगवान ने मुझे जो क्वेश्चन पेपर दिया है वही क्वेश्चन पेपर आपको नहीं दिया है. आपके लिए कोई अलग क्वेश्चंस है, आपके लिए कोई अलग स्ट्रेंथ्स वो जज करना चाहता है. प्रॉब्लम ये हो जाता है लाइफ में कि हम लोग एक दूसरे को कॉपी करने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि साला हम दोनों को जो क्वेश्चन पेपर दिया था वो क्वेश्चन पेपर ही अलग है. एंड दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स बिल्डिंग स्ट्रेस इन योर माइंड. और जब तक आप खुद वो स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, उसको टैकल नहीं कर पाओगे, तब तक टेक माय वर्ड्स, you would not find the correct solution to tackle all these stressful situations. और होता क्या है पता है, हम लोग जब कंपैरिजन चालू करते हैं ना, वी फील अरे यार उसने ऐसे किया तो मैंने भी ऐसे करना चाहिए. बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि साला भगवान ने हम सब लोगों को अलग क्वेश्चन पेपर सेट करके दिए हैं. मुझे कोई इमोशनल चैलेंजेस होगी, किसी दूसरे बंदे को फाइनेंशियल चैलेंजेस होगी, कोई बंदे को फैमिली चैलेंजेस होगी, किसी को करियर चैलेंजेस होगी, लेकिन हर एक लिविंग ह्यूमन बीइंग को कोई ना कोई चैलेंजेस है. एंड इट्स एन यूनिवर्सल ट्रुथ. जब तक हम लोग अपने 4 एज पे काम नहीं करेंगे, आई होप 4 एज आप सब लोगों को याद है. फर्स्ट इज अवॉइड, दूसरी थिंग है अल्टर, तीसरी थिंग है एक्सेप्ट एंड चौथी थिंग है एडप्ट. जब तक हम लोग चीजों को अवॉइड नहीं करेंगे, जब तक हम लोग खुद को अल्टर नहीं करेंगे, जब तक हम लोग सिचुएशंस को, चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जब तक हम लोग थिंग्स एडप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग स्ट्रेस के बाहर कभी नहीं आएंगे. एंड दिस इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ दैट वी ऑल नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन, दैट अगर हम लोगों को पीसफुल लाइफ अगर चाहिए, if we want to live a peaceful life, let us stop practicing stress. हम लोगों को इन 4 A's का इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए. और ये एक बार करके नहीं होगा, ये एक बार करके कभी नहीं होगा. ये हर रोज, हर वक्त, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड हमें ये 4 A's इंप्लीमेंट करते रहना है. एंड दैट इज हाउ इट इज गोना गिव अस a stress-free life and a peaceful life. Now, Priya Shinde madam अगर मीटिंग में है तो you can ask your question, madam. Sorry to kept you I kept you waiting for a long time, so sorry for that. You had raised your hand long time back, so it's just 15-20 minutes which are left, and I hope I would get many odd questions. Any question related to your life, any question related to your career, any question, and any damn question, any damn situation which actually put you in a stress, please go ahead and ask. I'll be more than happy. So yes. Good afternoon, sir. Priya ji, good afternoon. How are you? Yes, sir, fine. Okay. Sir, unless and until if I not take the tension, I am not able to execute the activity properly. I make Exactly. a mistake in that. So unless and until if that execution is not done, till then I am under pressure. And if I have not taken Okay. the pressure, definitely something is happened with that task. So Okay. I think it become my nature. Exactly. Madam, So how to tackle with this? How I can handle this kind of situation, or why I'm feeling that if I'm not taken the tension, then I'm not remain much more serious. I'm not able to focus, and I'm not able to execute that task properly. Yes, sir. Okay. See, many times, madam, if
let's on through my profile and we have events. So we end up doing like 150 events in an year. So जब भी हम लोग शादी मैनेज करते हैं ना, वो हो जाएगा ना, डेकोरेशन अच्छा दिखेगा ना, दुल्हा दुल्हन एक से होगी ना. For example, coming back to your task, we need to come to a point where we should make certain checklist. अगर आप आपके टास्क की चेकलिस्ट बनाते जाओगे, कैसे होता है मैडम पता है, हम लोग स्ट्रेस ले लेते हैं इन चीजों का जो चीज कभी होना संभव नहीं है. सो वी ऑलवेज गेट दैट स्ट्रेस आउट ऑफ थिंग्स ऑन विच वी थिंक. हम लोग जो सोचते हैं ना, बाप रे ऐसे होगा तो, बाप रे वैसे होगा तो, बाप रे इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये जब हम सोचना चालू करते हैं, that is the moment we get that stress. I am right? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Right? तो हम लोग अगर इन चीजों की चेकलिस्ट बनाते जाएंगे और उसकी एक टाइमशीट बनाएंगे कि मुझे अगर 3 बजे एक आध सेशन कंडक्ट करना है या एक आध कॉलेज की इवेंट एग्जीक्यूट करनी है, तो मुझे एक दिन पहले ये चीज कंप्लीट करनी है, 6 घंटे पहले ये पूरी चीजें चेक करनी है. तो होता क्या है पता है, आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच आ जाता है. See, taking pressure and taking stress is different thing. Pressure is just a pressure situation. मतलब मैं तो हमेशा बोलता हूं कि एक कच्चे चावल को राइस बनने के लिए अगर प्रेशर लगता है, तो एक बंदे को, एक साधारण बंदे को या बंदी को सक्सेसफुल बनने के लिए कितना प्रेशर लगेगा, राइट? मतलब राइस ग्रेन्स को अगर हम लोग बनाना है तो उसके लिए 20-30 मिनट उनको प्रेशर देना पड़ता है. प्रेशर कुकर उसी के लिए बना है. तो मेरे जैसे साधारण बंदे को अगर सक्सेसफुल बनना है, अगर कुछ लाइफ में बनना है, तो मुझे कितना प्रेशर लेना पड़ेगा, राइट? सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू लुक एट समथिंग. इन्हीं स्ट्रेसफुल चीजों को, इन्हीं पूरी सिचुएशन को अगर आप चैलेंजेस बोल के लोगे, तो आपको कभी स्ट्रेस आएगा ही नहीं. यू वुड फील दिस इज माई टास्क, दिस इज माई चैलेंज, and I gonna complete all these tasks and challenges in these ways. These are the ways which have been laid out, and this is the systemized approach which I have in my hands. There are few things. कल जाके चलो आपके कॉलेज की इवेंट चल रही हो और अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड ने लाइट कटवा दी, साउंड बंद हो गया, is that in your control? No, that is not in your control. So what we need to have and what we need to tackle to this situation is, what if this happens? What am I supposed to do? Do I have a phone number of the local electrical board office? Do I have a contact person? Do I have a backup plan? Do I have a generator in-house? Generator कौन सा प्यून चालू करेगा? So all these projected consequences, all these prospect situations, हम लोगों को पहले ही दिमाग में लेंगे, and then we need to tackle this up. So this is how it is. अगर आप क्राइसिस का भी प्लानिंग करके जाओगे तो आपको स्ट्रेस कभी नहीं आएगा, प्रिया मैडम. I hope I have answered your question. Is there anything else that I can guide you upon? Please go ahead and ask me. No worries at all. Thank you very much for your valuable guidance, sir. Thank you. Thank you, I Priya try my madam. level best to follow whatever the tips you are given. Thank you. Yes. Yes, sir. Thank you so much, Priya ji. Thank you. Taushif Patil ji has raised his hand since long. Taushif ji, whatever questions you have, please go ahead and ask. I would be more than happy to answer those. Sir, meanwhile, while we are discussing to reduce the stress, the moment we get the stress, we forget all the things. What you told. Because what happens is like, see, stress तभी आता है तौशीफ जी जब हम लोग prepared नहीं रहते हैं, right? For example, which topic do you teach? Sir, I teach for computer engineering department, C programming. C programming. So if I ask you, sir, आपको कल जाके क्लासरूम में क्लासिकल सिंगिंग सिखाना है, would you feel happy and comfortable? No, sir.
No. Why would? Because it would be a 11th hour surprise. यार ये क्या हो गया? मैं C++ सिखा सकता हूँ, मैं सिखा सकता हूँ, because I'm comfortable doing this, right? तो होता क्या है, more or less many odd situations we don't prepare ourselves well. हम लोग इन प्रोजेक्टेड सिचुएशंस को, these prospect situations को, क्राइसिस सिचुएशंस को खुद को मैनेज नहीं कर पाते, एंड दैट इज वेयर वी लैक. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल चीज तौशिफ जी बोल देता हूँ, with due respect to all the ladies and gents in the group, it can happen at any time to anyone. For example, आपने एक शर्ट पैंट पहन ली, आप कॉलेज में चले गए, और आपको कॉलेज में एक लेक्चर देते वक्त पता चला कि मेरी ट्राउजर थाइस के यहाँ पे कहीं इतनी सी फट गई हो. स्ट्रेस आ गया, राइट? दिस इज 11th hour सरप्राइज. स्ट्रेस आएगा ना? Yes, sir. That is the moment you would feel like stress. बाप रे, ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? So these are the factors. हम लोगों को इनको टैकल करना है. We need to find a way. हम लोगों को वहां हैंकी पकड़ के बात करनी पड़ेगी, डस्टर पकड़ना पड़ेगा, चेयर के पीछे जाके बात करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. बट इफ आई गिव यू अ टास्क कि आपको नीच के यहाँ पे आपकी पैंट फटी हो, हाँ, जो आपने खरीद ली हो, जीन्स हमने बहुत बार देखी यहाँ पे थाइस के अप में फटी हुई रहती है, एंड गर्ल्स वेयर दैट जीन्स, बॉयज वेयर दैट जीन्स. डू दे फील स्ट्रेसफुल? No, they don't. So it's the same situation. But the way we look at it is absolutely different. I'll tell you one incident. I'm a host. I'm an MC. So, oh my God, my AC has gone down. Just give me 1 sec. भाई हो जा कुछ. एक बार हुआ क्या? I was hosting a political event. I generally don't host political events, but the local leader, he somehow pressurized me and said, Anish, करनी है तो तुझे ही करनी है. I'll not take the party's name. I'll not take the leader's name as well. So, यार स्टेज पे ऐसे 40-45 लोग बैठे हुए थे. I mean, this was first ever in my lifetime, क्योंकि मैं संगीत संध्या होस्ट करता था, मैं सेलिब्रिटी शोज होस्ट करता था, and that was, we had a structured program के नमस्कार, सत श्री अकाल, शुभ संध्या, सलाम टू ऑल एंड नमस्ते टू खास. मैं अनीश सहस्त्रबुद्धे आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं. आज पटेल फैमिली की ओर से सभी सजदज के जो सभी लेडीज आ गई है, बहुत उठ के दिख रही है, बहुत बढ़िया दिख रही है, लेकिन ये ऐसे इस तरीके से we used to do it, and that was a structured thing. यहाँ पे हुआ क्या पता है? They had given me this flow chart. पहले दीप प्रज्वलन होगा, लैंप लाइटिंग होगा, उसके बाद ये कोई युवा अध्यक्ष बात करेगा, वो प्रस्तावना करेगा, और उसके बाद कोई जो महाराष्ट्र का उनका प्रदेश अध्यक्ष है वो आके सबके सामने बात करेंगे. समझ को कि मैंने पूरा प्रिपेयर किया, तो मैंने चालू किया. सूरज ना बन पाए तो दीप बन के जलता चल, इसी 2 पंक्तियों की ओर से पक्ष चालू हुआ था. ये पार्टी चालू हो गई थी इन द ईयर ब्ला ब्ला ब्ला. आज इस पार्टी ने जिस तरीके से अपने आप को सूरज बना लिया है, तो ब्ला ब्ला मैंने बोला कि इन सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लैंप लाइटिंग के लिए आ जाए. उसके बाद मैंने वो कार्याध्यक्ष को बुला, वो जो युवा अध्यक्ष था, कि भाई आज के शो की जो प्रस्तावना है, आज का जो कार्यक्रम है, उसकी प्रस्तावना पेश करने के लिए मैं इनको बुला रहा हूं. उस बंदे ने उसका कागज ले लिया और उस बंच से चीफ गेस्ट की इंट्रोडक्शन का कागज भी उठा लिया. Now I went again at the dais और मैंने देखा तो सीधा चीफ गेस्ट पीछे दिखा. ना मुझे स्टेज से 45 लोगों में वो चीफ गेस्ट का नाम दिख रहा था, ना पीछे लगाए हुए बैनर में वो नाम दिख रहा था, क्योंकि इतने लोग बैठे थे कि उनका लिखा हुआ नाम पूरे बैनर के बॉटम में था. सामने 1,500 कार्यकर्ता बैठे हैं और उनके सामने एक मेरे जैसा एंकर गया है और मुझे पता ही नहीं है कि चीफ गेस्ट कौन है. इमेजिन अ सिचुएशन क्या रहेगा. बट देन आई मीन आई वॉज स्टैंड स्टिल. मैं मराठीत म्हणतात ना, स्तब्ध होतो मी तिथे जाऊन. आय कुडंट रिएक्ट. मैं ऐसे ही खड़ा रहा वहां पे.
तो मैं देख रहा था, आई कुड गेट सम हिंट कि आज का चीफ गेस्ट कौन है, बाद में खींच लूंगा शो। आई मीन 10-15 सेकेंड्स मेरे लिए वो बोलते हैं ना हम लोग की पूरा खानदान याद आ गया, वैसे वाली सिचुएशन थी। बट देन विद द एक्सपीरियंस ऑफ एंकरिंग, होस्टिंग एंड डिलीवरिंग सेशंस, मैंने बोला यार आज कुछ अलग करते हैं। मैंने क्राउड को पूछा, भाई आप सभी लोगों को पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज इतनी बड़ी हस्ती हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट बोल के आ गई है कि उनका नाम मेरे जैसे साधारण व्यक्ति ने लेना, यही उनका अपमान होगा, यही उनको हम लोग डिमीन करेंगे, ऐसा होगा। तो आई वांट यू ऑल पीपल, मैं चाहता हूं आप सभी लोग एक बार जोर से मुझे बोल दो कि आज के चीफ गेस्ट कौन है। 1,500 कार्यकर्ताओं ने वो प्रदेशाध्यक्ष का नाम मुझे बोल दिया। और उसके बाद पॉलिटिकल बंदे के बारे में अच्छी बात करना डिफिकल्ट नहीं है। इन्हीं के वजह से पक्ष बना था, इन्हीं के वजह से कार्यकर्ता आज हमारे साथ जुड़े। इनका सांस्कृतिक सेक्टर में काम काफी अच्छा है, स्पोर्ट्स के इन्होंने बढ़ावा बहुत दिया है। 2-3 मिनट मैंने बात कर ली, लोगों ने तालियां बजाई और मैंने उनको इनवाइट कर दिया। अभी पूरा शो खत्म हुआ, ये पूरी खत्म। Hello, Chick. Hello, Chick. I'm back again. Sorry, guys. Extremely sorry for this network issue. You all can hear me and you all can see me now. Someone please say yes in the chat box. I hope you all can see me now and you all can hear me now. I'm audible. Just the poor network. Hello, Chick. Hello, Chick. Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Yes, sir. We can hear you. I'm audible, right? तो जब घर के बाहर गया, the local leader called me up and said, "अनिल, मुझे वो साहब ने बुलाया।" मैं बोला मैं फंस गया अभी, क्योंकि उन्होंने जो कागज दिया था, उन्होंने जो पेपर दिया था इंट्रोडक्शन का, उसमें तो मैंने कुछ बोला नहीं था। मैं बोला अभी आज वाट लगने वाली है अपनी। जब मैं उसके पास गया, बोला बेटा नाम क्या है तेरा? आई वाज जस्ट 20 years old at that time, 21, not more than that. Hey man, come on, I lost my connection again. No, sir. We can hear you. Oh, yes, it's lost. Acha, I can. Okay, great. Yes. Okay. Am I audible again? Yes, sir. Am I audible again? Okay. So now what happened? Yes, sir. Yes, This sir. guy called me up. वो प्रदेश अध्यक्ष जी ने बुलाया और मुझे बोला कि भाई आज तक मैं 23 सालों से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन इस साल में आज तक की सबसे बढ़िया इंट्रोडक्शन थी। I mean, मैंने मनी मन बोल दिया कि सर आज तक किसी ने घुमाया होगा, आज वो दिन था और मैंने somehow I could manage it. So it is स्ट्रेस ले लेता था और तब बोलता कि यार सर मुझे वो कागज दो, तो probably I would have not got this appreciation ever. मैंने आज तक ये appreciation नहीं लिया रहता।
So for me, life is as simple as how it could be. आपको बस उस मोमेंट को जीना है, आपको बस आपकी लाइफ सिंपल रखनी है, ज्यादा सोचना नहीं है. Can anyone tell me when you're gonna die? आप कब मरने वाले हो कोई बोल सकता है मुझे? Can anyone tell me here? No, we cannot say हम लोग कब मरने वाले हैं. तो किस चीज को साथ लेके जाओगे? कुछ नहीं जाओगे यार. Have a stress free life. जो है उसको एंजॉय करो, जो नहीं है वो पाने की चाह रखो, उसके लिए एफर्ट्स करो, बट उसके पीछे दौड़ो मत, भागो मत, कुछ नहीं होगा. दो चीजें जिंदगी में कम मिलेगी तो आपकी जिंदगी कोई नई छीन लेगा बॉस. तो प्लीज कीप दिस इन माइंड. तो जैसे प्रिया मैडम, आई वाज टेलिंग यू, तौशीफ जी मैं आपको बोल रहा था कि हम लोग जब भूल जाते हैं ना, यूज योर कॉमन सेंस. That is the best ever tool that God has given us. आप भूल जाओगे ना तो ऐसे सोचो कि यार कॉमनली इस चीज को कैसे टैकल किया जाए. ये मत सोचो कि यार मैं ऐसे टैकल करूंगा तो क्या होगा. सो कीप योर लाइफ सिंपल, कीप योर लाइफ इजी. ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक सुनो, दिल खुश होके गाओ, चाहे आप सुर में गा रहे हो या बेसुर गा रहे हो, बस दिल खोल के गा लो. डांस करो, पार्टी करो, सब कुछ करो. टेक माय वर्ड्स, ये दिन 10 दिसंबर 2021 आपके लाइफ में वापस कभी नहीं आने वाला है. इस दिन को हम लोगों को आज ही जीना है. और आई मीन, इफ वी डोंट लीव टुडेज डे टुडे, व्हेन यू गोना लीव इट टुमारो और आफ्टर टुमारो, यू वुड नॉट गेट दैट चांस टू लीव इट आफ्टर टुडे. 10 दिसंबर 2021 आप कल जी सकते हो? Can anyone do that? None of us have got that time machine. जो है लाइफ, पहली चीज लोग क्या बोल रहे हैं ना, ये मत सुनो. आधा से ज्यादा सुख शांति तो वही है. Take my words. So please, I'm expecting like, मैं सबको हात मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि इंडियन वे में लाइक हात जोडून सगळ्यांना विनंती आपण म्हणतो ना. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज डोंट मेक योर लाइफ प्रॉब्लमेटिक. इट इज वी हु डू इट. प्लीज अपनी लाइफ प्रॉब्लमेटिक मत करो, अपनी लाइफ इजी रखो, अपनी लाइफ अच्छी रखो और अपनी लाइफ हैप्पीली जियो. आज का दिन आज मिलना है जीने के लिए, उसको आज पूरा का पूरा यूज करो. अगर आपको 5 मिनट में नींद आ रही है ना, यू आर द हैप्पीएस्ट एंटिटी ऑन द अर्थ. और अगर आप 5 मिनट में नहीं सो पा रहे हो, वर्क ऑन योरसेल्फ, नॉट ऑन द सराउंडिंग्स. आप बाकी चीजों पे मत काम करो, आप खुद पे काम करो, तब जाके आप 5 मिनट में आराम से सो जाओगे. आई होप I have tried my level best to guide you on how you can travel on a stress-free life path and a peaceful life path. Last 5 minutes to end up this session. I would be more than happy if you could subscribe to my YouTube channel, which is in the name of Anish Sahasrabudhe, जहां पे मैं रोज एक वीडियो लेके आता हूं 1 मिनट का. क्योंकि क्या है पता है, आज के तारीख में गोरे दिखने की, फेयर दिखने की इंडस्ट्री हमने 15,000 करोड़ की बनाई है. मतलब हर एक बंदे को बस फेयर दिखना है, हर एक बंदे को यार वाइट दिखना है, हर एक बंदे को अच्छा दिखना है, अच्छा है या अच्छा बर्ताव करना है, अच्छे लोगों से जुड़ना है, अच्छा काम करना है. इसकी इंडस्ट्री बनी ही नहीं है. तो क्या है पता है, सोप्स, शैम्पूज, मॉइस्चराइजर, ब्लीच क्रीम्स और पता नहीं वो क्या क्या क्रीम्स आते हैं. इन सबकी इंडस्ट्री आज के तारीख में 40,000 करोड़ की है. कैन यू बीट दिस? मतलब शैम्पू से लेकर पेडिक्योर, मैनिक्योर तक हम लोग जाएंगे तो 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री अच्छा दिखने के लिए, अच्छा रहने के लिए हमने बनाई है. बट अच्छी सोच के लिए, अच्छे मोटिवेशन के लिए, अच्छी ह्यूमैनिटी के लिए या फिर एक ह्यूमन बीइंग को अच्छा बनाने के लिए आज तक हमने इंडस्ट्री नहीं बनाई है. तो मैं सोचता हूं
कि अपने बॉडी को शावर लेने से अच्छा है, वो तो जरूरी है, हम लोग रोज स्नान करते हैं, हम लोग रोज शावर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बॉडी रोज रोज गंदी हो जाती है। बट आप सब लोग तो टीचर्स हो, आप सभी लोगों को पता है कि अपने बॉडी से पहले अपना मन गंदा होते रहता है। तो अपना मन सबसे पहले गंदा होता है, अपना मन सबसे फास्ट गंदा होता है, और उसके बाद अपनी बॉडी गंदी होती है। अपने मन को शावर रोज का रोज चाहिए, और वही शावर ज्याला आम्ही आंघोळ म्हणतो मराठीत, तो वही शावर अपने मन को प्यूरिफाई करने के लिए मैं रोज एक शावर लेके आता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई एम एक्सपेक्टिंग you all to please subscribe to my YouTube channel. It is in the name of Anish Sahasrabudhe. I expect उसका फायदा आप सभी लोगों को होगा। रोज 1 मिनट अपना मन साफ रखने के लिए प्लीज स्पेंड करो। प्लीज बोल रहा हूं, उसमें मेरा कुछ फायदा नहीं है, ना मॉनिटरी है, ना कोई करियरिस्टिक है, कुछ है। I just want people to live happily. I just want people to live with the utmost peace. I just want people to live life as they are. See, पता है मेन चीज क्या है? सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर जैसे नहीं बनना था, अमिताभ बच्चन जी को अमिताभ बच्चन जैसे नहीं बनना था, विराट कोहली को विराट कोहली जैसे नहीं बनना था, उनको बस वो जैसे है वैसे बनना था। लेकिन आज पूरी इंडस्ट्री, पूरे क्लासेस, मतलब सचिन तेंदुलकर बनाने के लिए कितने क्रिकेट क्लब्स चालू हो गए, अमिताभ बच्चन जी को बनाने के लिए कितनी आर्ट स्कूल्स या ड्रामा स्कूल्स चालू हो गई, लता दीदी जी जैसे सिंगर बनाने के लिए कितने म्यूजिक चालू हो गए। कोई इंस्टीट्यूट आप जैसे हो वैसे बनाने के लिए क्यों चालू नहीं हो रही है पता नहीं, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप जैसे हो वैसे बनो। एक दिन आप अपने आप बड़े बन जाओगे, क्योंकि आप होगे वो असली चीज होगी, वो किसी की देखी हुई, किसी की फॉलो की हुई नकली चीज नहीं होगी। अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हो, हैप्पी रहना चाहते हो, बट बस अपने आप के लिए जियो और अपने आप के लिए मरो, इज द ओनली रिक्वेस्ट एंड एन इजीएस्ट वे टू हैव अ हैप्पी लाइफ, is the final takeaway out of the total session that we had today. Thank you so much again for A.G. Patil Polytechnic Institute for inviting me here along with AICTE for giving me an opportunity to share my knowledge, share my experience, share whatever I could have with me, with all of you, all of your faculty members. So anytime if you want me to come to your college and address students, I would be more than happy to do that. So thank you so much, all of you again. Let us meet somewhere in some of the institutes that you are working with. I think Kailash ji wants to say something. Kailash ji, all yours. I mean, done from my end. Thank you so much. Have a great day ahead. Kailash ji, all yours. You can unmute yourself. कैलाश जी, यू कैन स्पीक ना, तुम्ही बोलू शकता, आप बात कर सकते हो। थैंक यू दीपा मैडम, थैंक यू। Is there any participants to ask some more questions to Anish sir? We have time to ask some questions to Anish sir so that you will get some informative knowledge from Anish sir. Is there anybody? If anyone wants to ask any of the question, I'm always here to guide you through. Priya Shinde madam, excellent session. Thank Kailash you so much. Pardeshi sir, please, you can unmute yourself and ask. Right. Sir, it was really excited session, and we really enjoyed it. Definitely, we would join your YouTube channel. That would be our pleasure. Apart from YouTube channel, is there anything that we can follow you, sir? I'm there on Facebook as well. In the name of Anish Sahasrabudhe. I'm there on Instagram as well.
if you guys want my mobile number, like WhatsApp number, जहाँ पे मेरे status के ऊपर मैं काफी सारी चीजें रख देता हूँ. So this is my WhatsApp number. I have just shared it in a chat box, so you can take it down. So you can 8237 37 12 22 22 53. 53. Thank you very much, sir. Thank you so much again. Yes, sir. All yours, Jai Pinjar sir. Good afternoon, all participants and Anis sir. So it's a time to conclude our today's session. So we have experienced an amazing session by our Anis Sahasrabuddhe sir. It was a desire to learn about ability to handle stress management. It has certainly given another outlook towards the research context. I am sure that all participants have enjoyed today's session. On behalf of organizing committee of 1 week online AICT IST induction program, I acknowledge the valuable contribution of today's expert person, Mr. Anis Sahasrabuddhe sir. I would like to thank to all the participants who have attended today's session. Thank you, Anis sir. I request Thank to you. participants, we will start our next session at 3 p.m. sharp. Before that, all of you join the same link before 10 minutes. Okay. Thank you, participants. Thank you, Anis sir, for your kind Thank you, words. sir. Thank you so much. Bye bye. See you. Nice day, sir. Okay. Bye.